Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश की जानी मानी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices extend losses amid escalating geopolitical tensions. Sensex drops over 570 points to close at 81,119 and Nifty closes at 24,719. Israel strikes on Iran rattle global markets. All major Asian indices end in negative territory. European markets trading with cuts. And global crude oil prices witness sharp uptick of over 7%. Brent crude trades above $74 per barrel. दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट। सेंसेक्स 570 अंक से अधिक फिसला। निफ्टी 24,750 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। ईरान पर इजरायल के हमले से दुनिया भर के बाजार हुए प्रभावित। एशिया के प्रमुख बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। यूरोपीय बाजारों में भी नरमी के साथ चल रहा है कारोबार। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम 7% से अधिक उछले। ब्रेंट क्रूड का भाव $74 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर गिरावट हुई और प्रमुख सूचकांक 0.7% के आसपास घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का पूरा असर दिखा और बाजार पर बिकवाल हावी रहे। निवेशकों ने चौतरफा बिकवाली की। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 573 अंक यानी 0.7% घटकर 81,119 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 170 अंक यानी 0.68% नुकसान के साथ 24,719 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% से अधिक घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.3% के आसपास ही गिरावट आई। Benchmark domestic equity indices today ended on a weak note, weighed down by escalating geopolitical tensions and a broad sell-off across most sectors. The 30-share index at the BSE Sensex shed 573 points, 0.7% to close at 81,119. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 170 points or 0.68% to settle at 24,719. The broader market indices at the BSE also closed in negative territory. The mid-cap index declined over 0.3% and the small-cap index lost 0.3%. In the Sensex pack, 26 out of the 30 companies edged down. In the top laggards, Adani Ports shed 2.7%, ITC as well as SBI both lost more than 1.6% each, and IndusInd Bank fell almost 1.6%. Among the top gainers, Tech Mahindra rose over 1%. TCS increased more than 0.3% and Maruti added 0.16%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 21 sectors closed in negative territory. Among the top laggards, services dipped over 2%, BankX slipped over 1%, and FMCG as well as utilities both declined over 0.9% each. Conversely, realty added 0.13% and healthcare ended nearly flat. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,469 companies declined, shares of 1,516 companies advanced, while shares of 137 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 43 companies hit their 52-week high, while 33 companies hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 48 पैसे कमजोर हो गया, 86 रुपए 8 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक
98.49 पर चल रहा था। सुषमा जी, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि बाजार में आज गिरावट है, चौतरफा गिरावट है, लगभग सभी क्षेत्रों में निवेशकों ने इसे हम मुनाफा वसूली कहें या घबराहट की गिरावट कहें? नहीं, इसमें तो मुनाफा वसूली नहीं है। आज घबराहट वाला दिन है जी। आपने अपनी खबर में ही बात की है, एस्केलेटिंग जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बात की है। जी। जो ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, एक के बाद एक तरफा इजराइल ने अपने अटैक्स किए, उसके बाद ईरान ने ड्रोन अटैक किया, तो उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। और ये भी डर बढ़ गया है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो ईरान के पास है, उसमें से जो हमारी दुनिया भर की जो ट्रेड उसके बीच में से चलती है, 40% हमारी जो मर्चेंट कार्गो दुनिया की चलती है उसकी तरफ से शायद वो ना बंद हो जाए। तो ये सारे जो डर हैं कि जिस वजह से हमारी हो सकता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इफेक्ट हो जाए, तो और ये अगर ये जो सिलसिला अगर बंद ना हुआ या सेटल डाउन ना हुआ तो इसके काफ़ी रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। तो इसी वजह से यही डर से ये मेरे ख्याल स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन बाकी और देशों में भी ये हाल है। We saw a lot of short covering by DIIs. Yes, They were the net buyers to the tune of 9,394 crore rupees after they witnessed the FII selling to the tune of 3,831 crore rupees. Sushma, tell us about what is weighing on the minds of the FIIs, the FPIs, these hedge fund investors, because they bring in US dollars, which is actually in the US dollar index. It's come down. It went up substantially today as compared to yesterday. It was 97. Today it's almost 98.5. What's their thinking? How are they going to invest in our emerging markets, especially with what's happening in the US? Because there's a lot of linkages in terms of how they look at our markets and what the pricing of our securities are like. Well, first of all, right now I think, as I said, there is an overall nervousness in the market. That is number one, and that foreign institutional investors are not immune from that. Secondly, of course, domestic investors have always kept the faith in the Indian market. There, over the last 1 or 2 years, as FIIs have been pulling out, you have had the fact that the market has not collapsed simply because retail investors in this country have shown their faith in the India story and they have continued to invest. So foreign portfolio investors also are still one of the reasons that they have pulled out, apart from the geopolitical tensions that we are aware of. The fact is that there is still a feeling that Indian stocks are overvalued and that you can get, better valuations in other parts of Asia or even in other parts of the world. So that kind of feeling is there, but I don't think that foreign institutional investors they don't have, again, faith in the India story. They do have faith that India, as an emerging economy, it's the fastest growing in the world. But there is a feeling that because of the bull run that we have had actually over the last few years, the markets have been going on an upward trend, bullish trends have been very, very strong, that valuations are a bit too high. And they are, I think, actually probably waiting for the market to settle down. So I think that is what is in the mind of foreign portfolio investors right now. Of course, as I said, on top of the mind right now, whether it is domestic investors or foreign investors, I think right now is the geopolitical tensions. Well, let's talk about what's on the mind of the retail investors, because, they hear reports about BlackRock, for instance, private equity firms who are predicting that, the Sensex will cross 1 lakh. And already the market is fairly stable at 81,119. So typically the retail investor goes in for the mid cap and the small cap stocks, which have fallen just marginally. Today it fell much more yesterday. Would you advise them to hold on to their portfolio while this is taken care of? Wars are inevitable, but they don't prolong forever?
I think one of the things that has happened in recent times, and that is probably, I would say, since 2020, is that the proportion of young investors has gone up to the extent of probably 30 to 40% of them are in a much younger category than they ever were before. And they have actually been participating in this bullish market for quite some time. And the recent, I would say, over the last 1 year, the volatility in the market has kind of unnerved them. So they are used to getting very much, high returns from their investment. And I think now they have to learn that in the long term, you have to really hold on to your investments and wait for stability in the market. As you rightly pointed out, the projections for the Indian stock markets are very high, that it will go up. So therefore, my advice would be that they should hold on. A macro question, because CPI is below 3%, and typically it's dominated, it's weighed by the food basket. But how do you see oil prices shooting up, affecting inflation, especially after what's happening with tariffs imposed by the US? You have a 10% baseline tariff, 26% on India. How do you see all of these things coming together and affecting the inflation figure? But it's all linked, after all, to the RBI monetary policy. Yeah. Of course, this is very, very promising data that you talked about that has come in on inflation. It's certainly a great relief, and the RBI has just, done a 50 basis points rate cut. So the market has sort of justified the RBI's faith in this scenario. But yes, of course, if oil prices continue this trend, then it will be a problem. But even despite this problem, the spike that we're having of $73, big investment banks like JP Morgan are still anticipating that for the rest of the year, the oil markets will have an average price of about $60, which is very favorable for India. सुषमा जी, हम आपका ध्यान बाजार की ओर आकृष्ट करते हुए और ताजा घटना कह लें, भू राजनीतिक तनाव जो दुनिया भर में बढ़ रहा है, वहां आपको लिए चलना चाहेंगे। हम विगत कह लें कई वर्षों से भू राजनीतिक तनाव देख रहे हैं यूरोप में, रूस और यूक्रेन के बीच में। उसके अलावा इजराइल और गजा पट्टी को लेकर भी लंबे समय से हमने तनाव देखा। ईरान के साथ भी हल्का फुल्का जो फुलझड़ियां हैं वो हम देख चुके हैं, युद्ध की आशंकाएं देख चुके हैं। अब ताजा जो ये घटना हुई, ये क्यों महत्वपूर्ण समझी जा रही है कि दुनिया भर के बाजार इससे प्रभावित हो रहे हैं, और ये हरमुज की खाड़ी कह लें या कह लें कि क्या आशंकाएं हैं जो गहरा रही हैं, ये ध्यान रखते हुए कि रूस और कह लें कि जो ईरान है वो थोड़ा नजदीक आते दिख रहे हैं। देखिए, ये तो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, और अभी इजराइल ने अभी जो हमला किया है ईरान के ऊपर, उनका कहना ये है कि वो ईरान अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है, और हो सकता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बढ़ा रहे हैं। अब इसके बारे में कई चर्चाएं हुई हैं कि शायद ये वाकई में ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो उन्होंने हमले किए हैं वो खास कर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर किए हैं, और वो ये एक देखने वाली बात है कि उन्होंने ऑयल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं किया है। बिल्कुल। इससे ये तो हुआ है कि ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको हानि नहीं पहुंची है। तो मेरे ख्याल में ये हमें ये देखना चाहिए। अब ईरान ने भी अपने ड्रोन्स चलाए हैं, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो बड़े पावर्स हैं अमेरिका और रूस वगैरह, वो शायद अब आ जाएंगे इस मामले में और कोशिश करेंगे कि ये इसको मतलब काम डाउन करेंगे दोनों तरफ से। Well, let's now move over to the crude story, which has got everyone's attention today. Crude oil prices jumped more than 7% today, hitting the highest price in almost 5 months after Israel struck Iran, escalating tensions in West Asia and raising concerns worries about disrupted oil supplies. Brent crude was trading almost 7% up at $74.21 per barrel. WTI crude was also trading 7.6% up at $73.22 per barrel when reports last came in. Now we go over live to our Dubai correspondent Vinod Kumar for more updates. Vinod, I hope you can hear us at Market Mantra.
Yes, I can hear you. Well, it's good to have you, Vinod, the online from Dubai. Vinod, tell us what is the latest in terms of the escalating tensions between Iran and Israel, and what's the impact likely to be on the oil supplies? The oil that is taken commercially through the Strait of Hormuz. See, the very latest info that we get from our various sources is that total toll of today's attack by Israel is 78 killed and 329 injured from the residential areas of Tehran itself. And United States envoy for the Middle East, Steve Witkoff, wants to meet the Iranian Foreign Minister Arghachi on Sunday to continue the diplomatic talks, which the Iranians have confirmed their unwillingness. So this is the latest after the reports that we got from the morning. And in the morning, we had over 100 targets were hit by 200 odd Israeli jets, including their nuclear site at Natanz, and killing top leaders of Iran, like their IRGC commander, Ali Khamenei, a top nuclear scientist, and the chief of the armed staff. Israel has called what is called the most extensive military operation against Iran in decades. And the IDF fighter forces operating under precise intelligence guidance committed extensive attacks against Iran's air defense systems as well. So this means that now Iran doesn't have much of their air defense systems, and this will make Iran to use alternative means of defense, such as cutting off the Strait of Hormuz or other methods to contain this attack. And if such a act happens, then the oil prices is bound to jump. We are tracking this immediate economic impact on Iran-Israel conflict. And let me start with why this matters so much for our country, India. Our country imports over 80% of its crude oil, making one of the world's most vulnerable economies to oil price spikes. What is particularly alarming is that 2/3 of India's oil import and nearly half of our LNG comes from the Strait of Hormuz. Even though our trade imports from Iran itself is very less, we import much of our oil, apart from Russia, from Iraq, then Saudi Arabia and United Arab Emirates. So, right. Strait of Hormuz is very important for India, even though Saudi Arabia has come with this east-west corridor to access the Red Sea, as well as the UAE had come up with the Fujairah port. Still, the volumes are not that good. Suppose Iran blockades. This is a hypothetical scenario because which is very unlikely to happen, because Iran itself imports much of its non-oil trade from China through this Hormuz, and the United States have its fifth freight association. So the chance of this Strait of Hormuz completely getting blockaded is very less, but still there is a possibility, and it exports right. India's money as well. Every single dollar increase in oil prices will raise India's current account deficit by approximately $1.52 billion. So this is very crucial for India when it comes to the crude oil imports from this area. Right. Vinod, you mentioned about diplomacy, that the US is trying to bring this war to a early close because it's having an impact on international crude prices. You also mentioned about LNG, which is a chief import from the Middle East. Can you give us a timeline within which this is likely to be resolved? Because, in that Middle East area, there's also a conflict in Yemen between the Houthis and foreign vessels backed by US and Israel. Do you see a timeline, and what is the likely impact on international crude prices? Very briefly. See, the international crude prices, the last time international crude prices touched the high point was in the 2008 global financial crisis, when it touched $130. Analysts say that if you factor in inflation, this can very well go up to $150. And when it comes to the Houthis are an indirect arm of Iran, and they are using them as proxies for containing their other vested interests in this region. Yes, but as I mentioned, the presence of the U.S. Fifth place is a great mitigating and one factor for the global economy. With the presence of the U.S. fleet there, I will not hesitate to say that this escalation will not go up to the levels of what we have seen in 2008 when the global crude oil price has touched 430. And this is much more than trade. This is about the geopolitical stability of the region, and there are other players in this region like United Arab Emirates, Saudi Arabia, who wants a lasting peace in this area,
So I don't think so. This, even though Israel has declared this operation to last 2 weeks, the global crude oil prices, I would say, would stabilize. Then when it comes to India, India has got our diversified sources of oil across the world, and we are not that much dependent on Qatar for our LNG requirements, and we don't have much of heating requirements. So when it comes to India, we are well diversified with our presence of strategic oil reserves in Visakhapatnam and Padur, and the global oil crisis has to be contained, and this is in the interest of the major players in this region, right, apart from Israel, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Well, thank you, Vinod Kumar, for giving us the latest on what's happening in the crude oil market. Of course, we'll continue our discussion with our senior business journalist, Sushma Ramachandran, on what's happening in West Asia and typically what its impact is on the oil market. Thank you so much, Vinod Kumar, for being with us on Market Mantra for those detailed updates. Sushma, coming back to you, we got some updates in terms of LNG being our chief import, and we are pretty diversified in terms of our oil imports. Yes. And the question that came to my mind was Russia, because we buy a lot of crude oil from Russia itself. What's the route that we take when we import crude from Russia? Well, we are, of course, it's coming from the east, actually, from Russia, because it's coming from the northeastern oil fields of Russia. So it's coming there. And that is actually not much of a problem, because we have the West has imposed sanctions on Russia and said that other countries cannot buy crude at a price higher than $60 from Russia. Now, actually, that suits India. So we can say we've buying our crude from Russia, but for us it's quite cost effective in buying crude which is less than $60 per barrel. Plus, other countries, as your correspondent himself said, that we are diversified our supplies. So there are other competitors like Iraq and Kuwait are actually offering prices even cheaper than Russia, because everybody wants to compete to sell to India. We're one of the biggest importers in the world. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे सुषमा जी, तेल को लेकर जो एक दबाव, विशेष रूप से कह लें तेल निर्यातक देशों का जो हम देखा करते थे, वो दबाव वर्तमान काल में घटता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो आपसी एकता थी वह कहीं खंडित नजर आ रही है, और भारत के लिए ये स्थिति कहीं अधिक मुफीद लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो ओपेक कार्टेल का जो दबाव था दुनिया भर में, वो चला गया है। एक वजह ये है कि अमेरिका की जो तेल की जो उत्पादन है वो बढ़ गई है शेल ऑयल की वजह से। तो शेल ऑयल के आने से अब सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर जो है अमेरिका हो गया है। पहले रशिया होता था, अब अमेरिका हो गया है। तो इससे बहुत फर्क पड़ गया है। अब अमेरिका ओपेक में नहीं है, तो अमेरिका चाहता है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो इस वजह से ओपेक की जो प्रोडक्शन कोटास वगैरह हैं वो इतना काम नहीं करती जितना पहले करती थी। यानी श्रोता, हम उम्मीद करें कि तेल के दाम जो भी भड़के हैं वो बहुत तेज लगातार नहीं रह सकेंगे और ये नीचे आएंगे भू राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए। आइए चले खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और नजर डालें तेल के साथ सोने और चांदी पर, जिसकी चमक इस संकट काल में और बढ़ गई है। आज सुबह कारोबार शुरू होते ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की मांग बढ़ गई और इसके दाम एक बार फिर से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गए। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.9% बढ़कर 1,04,40 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 999 फाइन 0.5% बढ़त के साथ 1,06,870 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर एमसीएक्स में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 1.9% उछाल के साथ 1,02,75 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई आपूर्ति वाली चांदी भी 0.5% की बढ़त के साथ 1,06,420 रुपए
प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी का स्तर क्या दर्शा रहा, और जो हमारे निवेशक हैं जिनके घर शादी ब्याह है तो उनके लिए तो कोई चारा है नहीं, वो खरीदेंगे ही, कम खरीदें या अधिक, लेकिन निवेश के लिए सोना किस स्तर पर दिख रहा आपको? देखिए, सोने का जो दर है वो चढ़ता ही जाएगा इस साल, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे सोने और चांदी का साथ साथ दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको सेफ हेवन एसेट कहते हैं। जब भी कोई उथल पुथल होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई क्राइसिस होता है, इमरजेंसी होता है, तो लोग समझते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ डालें, सबसे मजबूत जगह कहाँ है, सबसे सेफ जगह कहाँ है, वो है सोना। सोना किसी को मतलब आप इसको रख सकते हैं और इसको कभी भी बेच सकते हैं, तो ये सेफ हेवन एसेट है, इसका दाम बढ़ता ही जाएगा। Very briefly, Sushma, the uptick we have seen is in silver prices. Yes. It was $30 per troy ounce, and now it's climbed to $36.29. Right now the market is spotted and live as well. Why is this sharp uptick in silver more than gold? Well, it's partly also because because gold prices are so high that people are thinking of investing in silver. It's become a safe haven investment. The other thing is, of course, silver is also used in industrial areas. So the demand for silver is, in fact, more diverse than for gold. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वहां से विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 5 अरब 17 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 696 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर 587 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 85 अरब 88 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। एसडीआर 102 मिलियन डॉलर बढ़त के साथ 18 अरब 67 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के पास रखे गए भारतीय रिजर्व बैंक का धन 14 मिलियन डॉलर बढ़त के साथ 4 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। साथ ही चलते हैं वैश्विक बाजार। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से बिकवाली जमकर की गई। गौरतलब है कि इजरायल ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला कर चुका है। मिसाइल कारखाने भी प्रभावित हुए हैं और कुछ वरिष्ठ सैन्य कर्मी भी। ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने की खबर दी गई है, जिससे तनाव चरम पर है। इन सब खबरों के बीच निवेशकों की बिकवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और हांगकांग का हेंगसेंग 0.6% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली चल रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.2% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.9% की कमी थी। लंदन का FTSE 100 भी 0.23% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US markets, US stocks ended in positive territory on Thursday after a strong outlook from a leading computer technology company fueled optimism around artificial intelligence. The S&P 500 gained 0.38% and the Nasdaq Composite Index, as well as the Dow Jones Industrial Average, both added 0.24% each. My question is that since the US is well hedged in terms of oil supplies and it exports as well, how do you see the European market, because they're affected by the Ukraine war? Are they likely to be affected by this? Very briefly. Definitely they will be affected by this because energy prices have been going up in Europe unlike in India. जी, यानी प्रभावित होंगे यूरोप के बाजार वर्तमान स्थितियों से, यही हमारे विशेषज्ञ का कहना। और आप श्रोताओं की ओर से बस यहीं पर हम सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices extend losses amid escalating geopolitical tensions. Sensex drops over 570 points. Nifty closes below 24,750. Israel strikes on Iran rattle global markets. All major Asian indices end in negative territory. European markets trading with cuts, and global crude oil prices witness sharp uptick of over 7%. Brent crude trades above $74 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market